Welcome back to this special India-Pakistan debate coming to you live from Dubai, also linking up to New Delhi, Srinagar, Islamabad, the first television show of its kind. Before we return to our panelists, let's hear from the voices of the people here in this audience, Indians and Pakistanis. My question is actually more of a statement rather than a question, because when Farooq was talking about cinema being driven by commercial interest rather than any sort of propaganda, I would agree with that. Instead of, for instance, when GeoTV's offices were trashed in Pakistan, that wasn't, it showed a reflection of what the administration was, the way it was treating its media as well. So I think it's not more for propaganda from India's side as much as Pakistan. I think instead of taking blames or just shooting out blames at each other, we must understand the intricacies of mass media and just use it as a platform. Okay, you've spoken about culture and how it often gets suppressed on both sides. Let's go to our guest. Sheikh Rasheed, we've got guests from Islamabad and Srinagar as well. But what about her question? Ek minute. Let's go to Deepak Parwani, who joins us from Islamabad, fashion designer. Deepak, as someone who's really outside the world of politics and represents generation next of this subcontinent, do you find yourself completely switched off when all debates on India-Pakistan end up in only two things, terrorism or Kashmir? It seems that's all we ever seem capable of talking about. And also Dawood Ibrahim. And also Dawood Ibrahim. Okay. Deepak. Well, that's what you guys seem to be talking about. You know, we have a lot more in Pakistan to talk about. You know, we've got culture, cinema, art, politics, and a lot of other things. It's just that between the context of Pakistan and India, that's the only thing we seem to talk about. Dr. Masood, we can go to Mirwaiz Umar Farooq. Mirwaiz Umar Farooq sahab, assalamu alaikum. Mirwaiz sahab, assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम. मीरवाइज साहब, आपने कल यहाँ जो मुबाहिसा हुआ, आपने गुफ्तगू सुनी फारूक अब्दुल्ला साहब और शेख रशीद और बाकी दोस्तों की, आपने देखी एनडीटीवी है जियो पे? जी हाँ, बिल्कुल देखी हमने. जी, ये बताइएगा मीरवाइज साहब के 60 साल तो हमने गुजार दिए. पहले तो हम लड़े अपनी आज़ादी के लिए और फिर हम आपस में लड़ना शुरू हो गए. अब ये बताइए कि आगे आपको क्या लगता है, क्या 60 साल के बाद भी इसी किस्म का कोई मुज़ाकरा कहीं हो रहा होगा और हम कश्मीर डिस्कस कर रहे होंगे, या आप संजीदगी से समझते हैं कि इन गुजरे चंद सालों में, पिछले 4-5 सालों में हकीकतन कोई पेशरफ्त हुई है, प्रोग्रेस हुई है किसी किस्म की? देखिए जी, सबसे बुनियादी बात तो ये है कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम और हुकूमतें वो ट्रस्ट और एतमाद कायम करने में कामयाब हो गई हैं जिसकी बुनियाद पे कश्मीर का मसला हल होगा. क्योंकि कश्मीर के मसले को अगर हल होना है तो इसकी बुनियाद इस बात पे होगी कि दोनों मुल्कों का ट्रस्ट लेवल और एतमाद कितना है आपस में. कश्मीर के जहाँ तक मसले की बात है, हम इसको कतई नज़र सियासत के एक इंसानी मसला समझते हैं कि पिछले 60 साल से एक बर्निंग इशू है जिसमें कि हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए हैं, फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं, डिवाइडेड लोग हैं. तो आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप को और ख़ासकर आवाम को, मुझे इस बात की खुशी है कि हमें मौका मिला पाकिस्तान जाने का और मैंने पहली बार ये महसूस किया कि तब्दीली है पाकिस्तान के अवाम में, एक चेंज है. अगरचे कश्मीर के हवाले से बड़ा जज्बाती उनका एक रवैया है, लेकिन एक रियलिस्टिक अप्रोच भी अब आने लगा है कि भाई इस मसले को हल होना है. प्रायोरिटी इसको इसमें देनी है कि भाई कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, न कि पाकिस्तान क्या चाहता है. हम चाहते हैं कि इसी सोच की अक्कासी इंडियन पब्लिक ओपिनियन में भी हो, इंडियन गवर्नमेंट लेवल पर भी हो. अभी तक जो हमने महसूस किया कि हमने दिल्ली से मुज़ाकरात का अमल शुरू किया, डायलॉग किया, अभी हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि क्या दिल्ली ने जहन बना लिया है, क्या वहाँ की जो पब्लिक ओपिनियन है, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वो वाकई ये समझती हैं क्या वक्त आ गया इसको हल करने का, या फिर ये सिर्फ उनके लिए एक सियासी नुक्ता है. अगर वाकई वो समझती हैं कि आगे चलना है, तो let me interrupt you. सजेशंस आ रहे हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं, आइए इस पे बैठ के बात करते हैं. ये वही बात है, फ्लेक्सिबिलिटी पाकिस्तान की तरफ से. Because I want to actually put this question to Mirza Hassan Beg, General Saab. General Saab, Umar Farooq raises an interesting point about Indian public opinion. मैं जो लड़की ने सवाल उठाया उससे जोड़ना चाहती हूँ. Not to ask you about Dawood Ibrahim, घिसा पिटा subject है, we know the stated positions, but to carry public opinion in either country is very very important. और वो public opinion perceptions पे आके अटक जाती है, चाहे वो दावूद इब्राहिम हो और टेररिज्म हो इंडिया में, चाहे वो कश्मीर का इशू हो पाकिस्तान में.
public opinion has to be carried by politicians, which is why when questions are just dismissed saying कश्मीर की बात मत करिए, दाऊद इब्राहिम की बात मत करिए, बात वहीं अटक जाती है। हकीकत यह है कि हम दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया बड़े बड़े फ़ैसलों के कैदी हैं। वो फ़ैसले जो बदले गए, गलत फ़ैसले किए गए। कल मैंने 2-3 बातों का तज़किरा किया था जनरल साहब के जवाब में, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन 3 साल के अंदर जो बड़े फ़ैसले किए गए नफ़रतों की बुनियाद पर, फ़ैसला हुआ अमेरिका और इंडिया के दरमियान ये जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बन रही है उसका बुनियादी मकसद है चीन की बढ़ती हुई ताकत को रोकना और कम करना। दूसरा बुनियादी मकसद है कि दुनिया इस्लाम की बढ़ती हुई जो एक्सट्रीमिज़म है उसको रोकना और तोड़ना। जब फ़ैसले ही नफ़रत की बुनियाद पर हो तो उसके नताइज बड़े वाज़ेह हो जाते हैं। कौम उस फ़ैसले की कैद में आ जाती है। आज हम उसी तशन्नुज की हालत में हैं दोनों ममालिक कि कैसे चीन की बढ़ती हुई ताकत को रोका जाए। कल जनरल साहब ने कहा यही बात, जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यही खौफ है कि हमने ये मुआहदा किया है और अमेरिका के साथ मिल करके बात कर रहे हैं, मुझे बात नेगेटिव बेसिस। जी कल आज जो मैं कहना चाहता हूँ उससे आगे की बात मैंने तहकीक किया है, मैंने मज़ामीन लिखे हैं कि जो मंजर मैं अफ़गानिस्तान में देख रहा हूँ, जितनी बड़ी साजिशें अमेरिका, भारत, जर्मनी, मोसाद, MI6 के दरमियान मिल करके जो साजिशें हो रही हैं, खौफ आता है उसको देख करके कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। क्यों? सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, ईरान के ख़िलाफ़, रूस के ख़िलाफ़, सेंट्रल एशिया के ख़िलाफ़, चाइना के ख़िलाफ़। आखिर ये कौन सी हिकमत अमली है? क्यों हम अपने आप को उस अज़ाब में डाल रहे हैं? फारूक शेख कम इन देयर, इज देयर मेरे पास इसके जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स है, मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन आपने एक ब्रॉडर पॉइंट किया, यू हिंटिंग इट व्हाइल नॉट यूजिंग दैट फ्रेज इस्लामोफोबिया, दैट देयर इज समथिंग लाइक दैट ड्राइविंग पॉलिटिक्स टुडे। फारूक शेख, इज देयर एक सैमुअल हंटिंगटन राइटर होते थे, ही स्पोक अबाउट अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, एंड तब लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शायद यू प्रोबब्ली नो हु आई एम टॉकिंग। 1993 की बात है। हाँ 1993 की। 1993 और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और मैंने किसी को कहा था कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का थीसिस किसी मुसलमान मुल्क के मदरसे से नहीं आया, बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से आया है। तो आप देख लें कि वहाँ की, और उस वक्त आया है जब अफगान जिहाद में मुसलमानों ने अमेरिका का साथ दिया था सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो there was no conflict then with Islam in the West. But 9/11, as you were saying earlier, has changed so many perceptions, and we battle with them in India every day. How people respond to Islam has become a very complicated issue, not just in the world, not just in Pakistan, but increasingly even in India itself, which prides itself as having the second largest Muslim population in the world. Farooq Saab. Well, I think if there is blame to be apportioned, it must be apportioned on both sides. There are a lot of misconceptions deliberately being planted, as General Saab said, about the Muslim population worldwide, and that is done by vested interest groups in the West. There is also a section amongst the Muslims whose activity and whose intentions, whatever else they might be, are certainly not Peaceable. according to Islam. So they are creating a lot of bad publicity for the religion that they scream and shout about espousing and championing. So we need to tackle it at both stages. It would be probably juvenile to expect and childish to expect that everybody is suddenly going to start reading the details of what Islamic history and Islamic religion originally is and understand that the religion is very good. It's some of the practitioners who are less than good. That's not going to happen. All right. The majority of the Muslim does not understand the basic tenets of his own religion. How does he expect the non-Muslim? So it is a movement that will have to happen. So it's a manipulation of religion. Yeah. ये जो फारूक शेख साहब दुनिया भर में हो रहा है, एक मिनट जनरल साहब, एक लम्हा, ये जो मुसलमानों का दुनिया भर में मामला चल रहा है, इराक में, अफगानिस्तान में, ईरान में, इंडिया में रहने वाला जो मुसलमान है, वो किस हद तक उसके ज़हन पे ये सारे वाक़यात असरअंदाज हो रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक अजीब व गरीब परसेप्शन होगा
کہ آدمی جو ہے ہندوستان میں رہنے والے مسلمان کو ہندوستان میں رہنے والے نان مسلم کانفلکٹ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی. ہمارے ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کا کانفلکٹ ہو جاتا ہے, ہندوز اور ہندوز کا کانفلکٹ ہو جاتا ہے, ود ان سیورل اکنامک سیکشنز کا کانفلکٹ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں نکسلائٹ ہوتے ہیں جو نان نکسلائٹ سے لڑ جاتے ہیں, آپ کے ہاں شیعہ ہوتے ہیں جو سنیوں سے لڑ جاتے ہیں, ریجن اے کے لوگ ریجن بی سے. دس از اے ہیومن پرابلم. ڈاکٹر صاحب ایک بات میں اس میں And if I may just complete, whatever has happened to the Muslims of India in the last 60 years, and I say this with complete confidence and not without enough awareness on the subject, is we are within our country more than capable of sorting it out amongst ourselves. میں آپ کو نریندر مودی صاحب کی مشاہد صاحب نے بات کی اور بہت صحیح بات کی. میں آپ کو بتلاؤں, آپ لوگ تو یقیناً جانتے ہی ہوں گے, نریندر مودی کے خلاف بولنے والوں میں more than 85% are non-Muslims. And the activity against Narendra Modi is being carried on predominantly by non-Muslims. لیکن کیا وجہ ہوئی کہ آپ کے یہاں بی جے پی پاور میں آ گئی, ہمارے ہاں تو مذہبی جماعتیں نہیں آ سکیں. ہمارے ہاں اگر 9/11 نہیں ہوتا مذہبی جماعتیں کبھی نہیں جیتتی, مذہبی جماعتیں جیتی 9/11 کے ریئیکشن, لیکن آپ کے ہاں بی جے پی جیتی. اوکے, آپ نے بی جے پی کی بات کی. ون سیکنڈ, آپ شیخ رشید کہیں گے کہ میں ایسی بات اچھا جلدی سے میں اور بات کہنا. دیکھیں بات یہ ہے, شیخ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ امریکن پالیسیز کے خلاف نفرتوں میں سارا مسلمان ون سائیڈڈ ہو رہا ہے, رائٹ. اس سے پہلے انڈیا کی صورتحال جو ہمارے ملک میں سمجھی جا رہی تھی وہ ایک نان الائنڈ, غیر جانبدار اور رشیا کے قریب اور دوسرے معاملات میں, اب جو ایک نیا انڈیا جنم پا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے قریب اور اس کے معاہدوں میں, ہمارے ہاں ایک اور ریلیجس فورسز جو ہیں جو کہ بیفور پارٹیشن جو ہیں وہ شاید پاکستان کے بنانے کی حامی نہیں تھی, ان کی سوچ جو ہے وہ یہ نہیں تھی. لیکن آج ساری فورسز جو ہے, کیونکہ ایک 9/11 کے بعد جو سیاست میں ایک اباؤٹ ٹرن لگا ہے, اس میں انڈیا نے بھی ایک بہت بڑا اباؤٹ ٹرن لگایا ہے. اس اباؤٹ ٹرن میں آج دنیا کا مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہماری غلط تعارف کرایا جا رہا ہے, ہمارا امیج تباہ کیا جا رہا ہے, اور ایک ایسی قوتیں جنم پا رہی ہیں جس کے ساتھ روز بروز عوام کی حمایت بڑھتی جا رہی ہے. ایک اور بات تک وی شوڈ پٹ آن دا ٹیبل, آپ نے بی جے پی کی بات کی, لیکن ان دی انڈیا پاکستان کانٹیکسٹ اٹ واز ایکچولی اے بی جے پی گورنمنٹ دیٹ انویلڈ دی پیس پروسیس. بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں میں کہ بالکل اٹل بہاری واجپئی صاحب ہیز پلیڈ اے رول آف اے اسٹیٹسمین لائک رچرڈ نکسن, اور جو اگر وہ پاور میں اس وقت ہوتے تو شاید زیادہ. میں اس میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انڈیا میں انتہا پسند ہوں تو یہ کشمیر کا مسئلہ جو اگر بی جے پی کی گورنمنٹ ہوتی تو مجھے پورا یقین ہے کہ آج پاکستان انڈیا کے تعلقات بہتر ہوتے, کیونکہ موجودہ گورنمنٹ نے بڑا چونٹی کی چال چلی ہے اور ٹائم ویسٹ کیا. But actually in opposition, Farooq Abdullah, quickly because Yashwant Sinha is waiting for us in Delhi. ایک بات کہوں آپ سے, میں چھوٹا بچہ تھا تب امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کے زبردست تھے. بہت صحیح بات. سینٹو, سیٹو, Yes. and it was all generated against India. India had no other way but to go to Russia and sign a treaty with Russia that any attack on India will be attack on Russia. ہم لوگ رشیا کے پاس اس لیے نہیں گئے کیونکہ امریکہ مہربان اتنا تھا کہ جو جہاز یا باقی چیزیں ہمیں امریکہ سے لیے تھے ان کا ہم لوگوں کو نٹ بولٹ نہیں ملتا تھا امریکہ سے. وہ تو ہمارے ساتھ بھی تھا. اب ہو رہا ہے نا, پہلے نہیں تھا, اب ہو رہا ہے. اب ذرا یہ چینج ہو رہا ہے, شفٹ ہو رہا ہے. آج آپ امریکہ کے دشمن ہیں اور ہم لوگوں کو امریکہ کا دوست بنا رہے ہیں. ہم امریکہ کے کوئی دوست نہیں ہیں. نہیں, آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم امریکہ کے دوست نہیں ہیں. We have to take a break. So much has been said about the BJP. 33% Muslims and Farooq Abdullah Hindus Sahab. are 70%. We are not friends of America. Farooq Sahab. So don't have that perception. Firstly, you put four Indians in one room. We are not friends of America. We put four Indians in one room. We have different opinions about everything. So you'll say There are 4 Pakistanis and also. 4 Pakistanis. But we need to take a break. After that, so much has been said about the BJP. Good, bad, ugly. Yashwant Sinha, senior BJP leader, will join us after a quick break. We'll be back for all of this after a break.
ویلکم بیک خواتین و حضرات. جنرل صاحب اور میں چاہوں گا اس طرف سب جواب دیں اس بات کا. یہ پرسیپشن جو ہے, تاثر کہ حکومتیں کر رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹس کر رہی ہیں, ایجنسیز, یہ تاثر جو عوام کے ذہنوں میں ہے, صحیح یا غلط؟ حقیقت کچھ اور, ریئلٹی کچھ اور, پرسیپشن ایک بن چکا. پرسیپشن کیسے ختم ہوگا؟ ہم کیسے جان پائیں گے کہ یہ پرسیپشن غلط ہے, یہ ریئلٹی ہے؟ جنرل صاحب. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بغداد پیکٹ انڈیا کے خلاف تھا, میں جانتا ہوں کہ میں اس کا حصہ رہا ہوں. جو بھی ہمیں ملٹری ایڈ ملتی تھی اس کا کوئی بھی حصہ ہندوستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. سینٹو بھی بنا ہے اس وقت بھی. یہ غلط پرسیپشن ہے کہ پرسیپشن ہے, وہ میں کہہ رہا ہوں غلط ہے, لیکن اس سے آپ ایک اسٹیپ آگے جائیے کہ جب غلط فیصلے کیے جائیں اسٹریٹجک لیول پہ, اس کے اتنے خطرناک اثرات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ پرسیپشن سے آگے ہٹ کر کے اتنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جس کا آج ہمیں ہمارے اور آپ کے درمیان وہ برائیاں, وہ کمزوریاں, وہ نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں جو میں نے ابھی بتایا. آپ اس کو ایک سوال جنرل صاحب ان کا بڑا اہم تھا جی کہ جب پاکستان امریکہ کی طرف چلا گیا تو پھر انڈیا کو جانا پڑا رشیا کی طرف. میرا سوال میں کہہ سکتا ہوں کچھ؟ جی. with due respects, you are senior to me. لڑائی میں we engage pattern tanks. لڑائی میں we engage pattern tanks. اور ہمارا جو انفارمیشن کہیے, it is not a perception that Pakistan entered into pact, Baghdad pact, Seato, CENTO both, purely to get American equipment to be used against India. And physically also in 65 we saw it. After 65 we went to Russia. Why? Simple reason. ہم لوگ جب مدد مانگے from US, from UK, ہمیں نصیحت ملی کہ بھئی شانتی سے رہو, تو پھر ہم روس کے پاس گئے. General Shankar, let me just interrupt you for a second That is because true, General Saab, that is Mushahid true. Saab, We got the American arms to counter the Indian threat because India was unwilling to solve Kashmir. Mushahid Saab, just want to India interrupt. also went to America in 62 to get the American arms. Mushahid جنرل صاحب کیا وجہ ہے بی جے پی کے دور میں زیادہ پیس پروسیس بڑھا؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ رہتے تو شاید بات آگے بڑھ ڈاکٹر جاتی. صاحب doesn't that establish, شیخ صاحب نے بھی ابھی کہا کہ the religion of the country has got nothing to do with the policy. It is the kind of political convenience that exists that the BJP can go ahead more confidently into coming into some kind of an agreement with Pakistan than probably a non-BJP government. So the religion factor is only a perception that is prevailing. No, but they carry the Hindu establishment with them. That way they are more confident. What do you see, Mushahid Saab, as the Hindu establishment? What do you see as the Hindu establishment? Again, the basis of the, let's speak, the partition was the religion. Yes. دیکھیں نا, یہ فیکٹر ہے, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ہمارے پیرنٹس بتاتے ہیں ہندو پانی, مسلم پانی, ریلوے اسٹیشن میں ہی ہوتا تھا. اینڈ پاکستان کی کریشن واز اے پروسیس آف مسلم سیلف ڈٹرمنیشن. وہ ریلیجن حاوی رہا, اس سے فرق پڑا. لیکن آج کے دور میں ان 2007 دور میرے خیال میں ایک جو رائٹ ونگ ہندو پارٹی, جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ, جنرل مشرف is stronger position to have peace with India than civilian leaders. Is the Indian establishment, even with the turbulence he faces today? Oh, he has been doing it in the last 3-4 years. وہ the process ongoing ہے. India میں بھی جو ہندوتوا کے لوگ ہیں, who are defenders of the faith and guardian of the family silver in India, وہ BJP ہے. کانگریس بیچارے مسز سونیا گاندھی اٹیلین کیتھولک ہے, سکھ پرائم منسٹر ہے, وہ اتنے اسٹرانگ نہیں جو ہندو. But he did sign a joint statement with your president in Cuba after the Bombay blast. Joint anti-terror mechanism. He continued that. But I give full credit to the BJP and Mr. Atal Bihari Vajpayee and also Mr. Advani کہ انہوں نے جو ہسٹورک سٹیپس لیے تھے وہ فالو تھرو کانگریس پارٹی نے نہیں کیے خوف کی وجہ سے. And that is why we didn't have an agreement on Seattle. Farooq Abdullah, do you share that assessment that not religion but the perception ki right wing yahan aur right wing yahan are best placed, that the hawks are best placed to deliver peace? Just as Richard Nixon, a right wing Republican, could make peace with the communists. My perception goes, I think if BJP sells this thing, peace. We have a Congress government right now. Let me tell you, no, if BJP sells it, there is always the thing that Shiv Sena and others will accept it. The hardcore will accept it. Shiv Sena to unka presidential candidate nahi accept karti. Hold on. That was because she was from Maharashtra, therefore they had to break on that thing. That is all that happened. But they voted for Najma Hepatullah when it came to voting. So there is nothing to go about it.
Point is that is perception. But I'm sure that the Congress government will also be able to carry on that process. Unfortunately, that process hasn't been carried on as fast as we expected it to happen. It's because of the instability that takes place in Pakistan recently that created this thing. And also, as I said before, the push from the Indian side wasn't as strong as it should have been, as was. ये मैं समझने से एक मिनट That is why it broke. एक बात मैं वक्त हमने बिल्कुल ज़ाया किया। समझने से काफिर हूँ, और मेरा नहीं ख्याल कि बरका आप भी इस बात से एग्री करेंगी। अब मैं नहीं समझता कि आजकल के नाजरीन अवाम बाशऊर हैं कि भारत कश्मीर के मसले पे इसलिए पेशरफ्त नहीं कर रहा, इसलिए जवाब नहीं दे रहा कि सदर मुशर्रफ की हुकूमत स्टेबल नहीं है। और आपने कल ये कहा कि फिर हम बुश से बात क्यों करें, मतलब फिर तो आपकी जो डील है इंडिया न्यूक्लियर डील वो भी बुश से हो रही है, तो फिर आप सोचेंगे जी बुश चला जाएगा तो फिर डील किससे होगी। ये बात कुछ आपको एक गलत हमें समझ नहीं आई। मैं आपको एक गलत फहमी से पाकिस्तान के अंदर टर्मोइल अगर 1 साल से 3 साल या 4 साल और रहेगा तो आप वहीं खड़े रहेंगे अपनी जगह पे। लेट मी टेल यू फ्रैंकली समथिंग। हिंदुस्तान बात आगे चलाना चाहता है, इनके यहाँ इलेक्शन आने वाले हैं, ये कोई ऐसा कदम इस वक्त नहीं उठा सकेंगे विच विल बी डेट्रीमेंटल टू देम। ये मैं एक सियासतदान की तरफ से बात करता हूँ। इस वक्त ये 4 महीने जब तक इनके इलेक्शन हो जाएंगे, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता जो मास लोग जो हैं जो कबूल नहीं करेंगे। पिछला 1 साल, हाँ पिछला 1 साल 2 साल ठीक है, वो तो छोड़ दीजिए, पीछे हमारी गलती हो गई, उसमें मैं मानता हूँ हमारी गलती हो कि हमने पेशरफ इतनी तेज नहीं की जितने इन लोगों ने की थी। मगर अब हमें मेहरबानी करके ये 4 महीने निकालने चाहिए जब तक ये लोग वापस आ जाएंगे, इलेक्शन करके आ जाएंगे और एक नई हुकूमत जो भी अल्लाह वहाँ भेजेगा उसके साथ मुज़ाकरात आपके इलेक्शन आ जाएंगे। नहीं हमारे इलेक्शन फिर बुश के आ जाएंगे। मैं एक बात कह सकता हूँ, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने बात आगे बढ़ाया है, लेकिन ऑन द क्रंच इशू you didn't get to the crunch issue. In Parliament, when this discussion was going on, people like me, I was in Parliament then, I told the then Prime Minister, Mr. Bajpai, I said it is a very good thing that we are going to have peace with Pakistan, but I would like you to guarantee that there will be no loss of territory in Kashmir. And when he came back, in his summing up of the debate, he said, I give a guarantee there will be no loss of territory in Kashmir. Isi baat par, if the BJP could have progressed the peace talks on the basis कि भाई जमीन का तकसीम नहीं होगा, तब हमें सबको मंजूर है। Okay, we are going on talking about the BJP. फिर वही बात आ गई। कश्मीर में आगे चलो। देखिए बात ये है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बात ये है कंप्लीट करें, शेख साहब वक्फा नहीं लेना चाह रहा शेख साहब की बात कि इंडिया और पाकिस्तान को क्या लगे कश्मीर का। लेट द कश्मीरी पीपल डिसाइड। देखें ना, हम क्या चौधरी बने हुए हैं उसके, अगर हम एक कहते हैं बात, क्योंकि अभी तक कश्मीरी लीडरशिप ऑन बोर्ड नहीं हुई। जो बात इंडिया और पाकिस्तान या एक थर्ड कंट्री की सपोर्ट के साथ चल रही है, अभी तक मार्केट में उसकी असल रूल्स एंड रेगुलेशन गेम के नहीं आए हुए। Okay, we are back to Kashmir like always. We are going to take a break.